Any questions? No, sir. Okay, so here we go. Hello. Hi. How are things? Great. How's everything? Pretty good, thanks. How are you doing? Okay, thanks. How's it going? Not bad. What's up? Can't complain. Cheerio. Bon voyage. Adieu. Sayonara. Okay? So this is what conversation informal. Today we are going to see other conversations. अभी हम लोग कुछ यहाँ पे other dialogues देखेंगे conversation के. These are the dialogues which are really very important, but we are going to have it in between our conversations. Okay? अब जब कभी हम लोग हिंदी वगैरह के अंदर बात करते हैं तो हम लोग कैसे बात करते हैं फीलिंग्स के साथ में, वैसे हम लोग को इंग्लिश में ही बोलना है. अब इंग्लिश के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशन होते हैं जहाँ पे हम लोगों को कुछ डायलॉग्स न्यू न्यू अलग अलग टाइप के डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं. अब वो डायलॉग्स क्या है, छोटे छोटे डायलॉग्स हैं बट बहुत काम के डायलॉग्स है. तो यू आर गोइंग टू यूज दीज डायलॉग्स इन योर कॉन्वर्सेशन. ओके, पॉइंट नंबर वन, पार्डन मी. पॉइंट नंबर वन इज व्हाट, पार्डन मी. हम लोग बोलते हैं ना, हेलो मैंने सुना नहीं, व्हाट व्हाट, तो उसको व्हाट व्हाट करके चिल्लाना नहीं उधर. सेइंग व्हाट व्हाट, व्हाट, सॉरी सॉरी, व्हाट सॉरी, वैसे चिल्लाने के मतलब नहीं है कुछ भी वहां पर. इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट, इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी, यू कैन से देयर पार्डन मी. यू कैन से देयर पार्डन मी. अब पार्डन मी का मतलब क्या होता है? मतलब मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपने जो बोला है मैंने सुना नहीं, क्या आप वो रिपीट करेंगे वापस से प्लीज? पार्डन मी. ओके, सो पार्डन मी, पार्डन मी, पार्डन मी. और यू कैन से आई बेग योर पार्डन. आई बेग योर पार्डन. मैं आपसे भीख मांगता हूँ. सच्ची की भीख मांग रहा है क्या बंदा? नहीं, सिर्फ बोलने का एक No. तरीका है, एक बोलने का स्टाइल है. आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने जो आपने बोला वो मैंने सुना नहीं. क्या आप उसको रिपीट करेंगे वापस से प्लीज? आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन. नेक्स्ट, कैन यू रिपीट द वर्ड Um, प्लीज? क्या आप वो वर्ड रिपीट करेंगे प्लीज? कैन यू रिपीट द वर्ड प्लीज? कैन यू रिपीट द वर्ड प्लीज? क्या आप वो वर्ड रिपीट करेंगे प्लीज? कैन यू रिपीट द सेंटेंस प्लीज? क्या वो सेंटेंस रिपीट करेंगे आप प्लीज? कैन यू रिपीट योर एड्रेस प्लीज? अभी हम लोग बोलते हैं ना किसी को आपका एड्रेस रिपीट करेंगे प्लीज. क्या आप आपका नाम रिपीट करेंगे प्लीज? क्या वो वर्ड रिपीट करेंगे? क्या वो आप ये रिपीट करेंगे? दैट्स व्हाट, कैन यू रिपीट द वर्ड प्लीज? कैन यू रिपीट द सेंटेंस प्लीज? कैन यू रिपीट योर एड्रेस प्लीज? Can you repeat the word please? So that's what, can you repeat the word please? Can you repeat the sentence please? Next one, can you spell it please? क्या आप उसका स्पेलिंग बताएंगे? अब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि आप उसका स्पेलिंग बताएंगे प्लीज, तो इसकी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग? कैन यू स्पेल इट प्लीज? क्या आप मुझे उसका स्पेलिंग बताएंगे प्लीज? कैन यू स्पेल इट प्लीज? ओके, और कैन यू स्पेल योर नेम प्लीज? क्या आप आपके नाम का स्पेलिंग बताएंगे प्लीज? और कैन यू स्पेल द एड्रेस प्लीज? क्या आपके नाम, आप एड्रेस स्पेलिंग बताएंगे प्लीज? कैन यू स्पेल योर नेम प्लीज? कैन यू स्पेल द एड्रेस प्लीज? गेटिंग इट? सो कैन यू स्पेल द नेम प्लीज? कैन यू रिपीट द एड्रेस प्लीज? नेक्स्ट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड? अभी हम लोग किसी को पूछते हैं ना, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, अरे इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस? What's the meaning of abandon? What's the meaning of Wajid? What's the meaning of Rohit? What's the meaning of Zubair? What's the meaning of Umair? So what's the meaning of, मतलब इसका मीनिंग क्या है? What's the meaning of, मतलब इसका मीनिंग क्या है? What's the meaning of? What's the meaning of this word? What's the meaning of that word? तो ये वर्ड का मीनिंग क्या है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, वो वर्ड का मीनिंग क्या है? सो वी कैन जस्ट आस्क लाइक दिस, ओके, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ, फॉर एग्जांपल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वॉल? वॉल का मतलब क्या होता है? सो यू कैन जस्ट पुट दैट द वर्ड. और आप लोग उसकी जगह पे दूसरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज उमैर मीन? व्हाट डज जुबैर मीन? सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड, व्हाट डज इट मीन? नेक्स्ट वन, अब इसकी जगह पे हम लोग और दूसरे डायलॉग्स भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन? अब ये मतलब क्या होता है इसका, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन चॉक एंड चीज? व्हाट डू मीन बाय चॉक एंड चीज? आई विल मेक चॉक एंड चीज टुडे. आज मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा. हाई लेवल के इंग्लिश में बोलते हैं चॉक एंड चीज. टू मेक द मैटर क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी कर देने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेक चॉक एंड चीज. हाई लेवल के इंग्लिश में यूज होता है.
मेक चॉक एंड चीज मतलब यानी दूध का दूध पानी का पानी कर देना. मेक चॉक एंड चीज. नेक्स्ट वन. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन चॉक एंड चीज? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? कितने लोगों को पता है ये होम एंड हाउस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज होम एंड व्हाट इज हाउस? यस रोहित, व्हाट इज होम, व्हाट इज हाउस? मिस्टर जुबैर, व्हाट इज होम, व्हाट इज हाउस? Both are same. सेम? नो. यही तो मैटर है आप लोगों का. पे अटेंशन. मिस्टर वाजिद, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? If you're writing a letter to your boss, I'm little feeling ill today. Can I go home or can I go to my house? क्या बोलेंगे? Home. Can I Why go? not? House क्यों नहीं House is बोलेंगे? house is casual. Home is. तो आप आपसे बॉस से बात कर रहे हैं तो आप कैजुअली बात करेंगे. Yes. Why do we say home? Why not house? Rohit. हाँ सर. Boss, I'm feeling हाउस well. कैजुअली हो जाता है. हाँ. होम फॉर्मल लगता है आणि हा हा हाउस. हा. कसले ठोकले बघा मी. होम फॉर्मल वाटतं जरा. हाउस जरा इन्फॉर्मल लगता. No, actually home and house both are very very different. ये प्रॉब्लम आप लोग अगर कभी अगर ये प्रॉब्लम अगर आप लोग के साथ में रहा तो आप लोग जिंदगी भर लटकेंगे. याद रखना है. Now home is what where your family lives. That's called home. And house is what just a building. House is just a building. हाँ वही बोलने मतलब वाला ये था. रूम होता है. हाउस इज जस्ट. मैं भी यही बोलने वाला था. होम किसको बोलते हैं? जहाँ पे हमारे एक फैमिली रहती है उसको अपन बोलते हैं होम. आप लोगों ने वर्ड सुना रहेगा होम टाउन. डू वी से हाउस टाउन? होम टाउन No. क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपनी वहाँ पे फैमिली रहती है. उसको अपन बोलते हैं होम टाउन. गेटिंग इट? एंड हाउस इज व्हाट जस्ट अ बिल्डिंग. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. होम इसको बोलते हैं जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है और हाउस उसको बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ अपन काम वगैरह करते हैं. खाली बिल्डिंग या जगह है, वहाँ पे अपनी फैमिली नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाउस सुना है कि नहीं आप लोगों ने? ग्रीन हाउस में Yes. फैमिली रहती. प्लांट हाउस फैमिली रहती है अपनी? नो. सेम केस व्हाइट हाउस फैमिली रहती है उसमें? No, sir. नहीं रहती. करेक्ट. So सो powerhouse. फॉर एग्जाम्पल गैस हाउस. करेक्ट. पावर हाउस इसमें फैमिली नहीं रहती है अपनी. नेक्स्ट सर्किट हाउस एटसेट्रा. हाउस कैन बी एनी हाउस. सेम केस अभी फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अब्दुल वाजिद जैसे कि पूना में थे तो वो क्या थे? हॉस्टल में रहते थे. तो वो हॉस्टल उनके लिए क्या है? हाउस. हॉस्टल इज योर हाउस. और अभी आपका घर कहाँ पर है मिस्टर? Nanded. Nanded. नांदेड़ इनका क्या है? Nanded. करेक्ट. नांदेड़ Home. इनका होम. Home. एंड दैट्स व्हाट होम टाउन. नांदेड़ इज द होम टाउन. नांदेड़ में इनका घर है. दैट्स व्हाट फैमिली वहाँ पे रहती है. दैट्स व्हाट होम. गेटिंग इट? Sir, hometown के alternate native place बोलते हैं चलता है क्या? या करेक्ट. नेटिव प्लेस मतलब आपका बचपन से जहाँ पे आप रहे हैं वो जगह को नेटिव प्लेस बोलेंगे. दैट्स नेटिव अच्छा. प्लेस. या अच्छा. जहाँ पे आप वही नेटिव प्लेस एंड होम टाउन बोथ आर द सेम. अच्छा. या ओके गाइस, चलो भी आप लोग जरा थोड़े से सुस्त हुए हैं. मुझे एक आप लोग से क्वेश्चन पूछना है. माय क्वेश्चन इज दिस ऑल ऑफ यू. व्हाट्स Yes. द डिफरेंस बिटवीन लुक, सी एंड वॉच? तीनों में डिफरेंस क्या है? वॉच, सी एंड लुक. वॉच मतलब देखना, लुक मतलब देखना, सी मतलब देखना. तीनों में डिफरेंस क्या है? यस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लुक, सी एंड वॉच? Yes. Three of them What's the using in difference a between looks? multiple purpose. Pardon? Three words using in different place. Yeah, I'm asking that only. When to use watch, when to use see, when to use look. सी मतलब सर कुछ चीज अपने पास है वो दिखाने के लिए सी. और लुक मतलब देखना है इधर, मतलब कोई इधर उधर चीज रहेगी उसको. और watch? I watch your time. थोड़ा दिमाग घुमाने वाली चीज है कि नहीं? आपने Watch means कुछ टाइम के लिए देखना.
नो. आप लोग मुझे इसका आंसर कल ला कर देंगे, ठीक है? Look at me. देखते कल कौन आंसर लेकर आता है. ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि आपका माइंड उड़ा देंगे एकदम. आप बोलेंगे अरे यार बाप रे, ये क्या है, ये क्या चल रहा है. सो ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आप लोग का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो प्लीज कोऑपरेट विथ मी. ओके. सो Yes. नेक्स्ट वन, what's the difference between watch, look and see? So what's the difference between watch and see? What's the difference between look and watch? Okay. So उनके बीच में फर्क क्या है? That's what's the difference between. Next one, can we say like this or can I say like this? Can we say like this? Can I say like this? Can we say like that? Can I say like that? Can we say, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं वैसा बोल सकता हूँ? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? Can we say like this? Can we say like that? Can we say like that? Can we say like this? Can I say like this? Can I say like that? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या मैं वैसे बोल सकता हूँ? That's what can we say like this? Can we say like that? Can I say like this? Can I say like that? Next one, last dialogue is really very important. Last dialogue is really very very important. I'm sorry, I'm not aware. अभी अपने यहाँ पे एक डायलॉग चलता है, I don't know. हम लोग क्या बोलते हैं? I don't know. I don't know. Wrong. I don't know नहीं बोलना चाहिए. I don't know जरा थोड़ा रूड लगता है. अभी अपने को कोई भी पूछता है What's the time? I don't know. मला माहित नाही, तुम्ही तुमचं बघून घ्या. ये जरा थोड़ा सा रूड लगता है. वो I don't know की जगह पे आप लोग क्या बोल सकते हैं? I'm sorry, I'm not aware. मैं माफी चाहता हूँ, मैं बेखबर हूँ. आहा, सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है. अगर किसी को अगर हम लोग बोलेंगे I don't know, तो सुनने में कितना रूड लगता है कि यार भाई कितना एटीट्यूड वाला आदमी जरा है. Instead of saying that, we can say, I'm sorry, I'm not aware. Okay? I'm sorry, I'm not aware. So this is what conversation other dialogues are there. Other the conversation dialogues. Okay? Pardon me. I beg your pardon. Can you repeat the word, please? Can you repeat the sentence, please? Can you spell it, please? What's the meaning of the word? Oh, what does it mean? Oh, what's the difference between? Can you say like this? Can you say like that? Oh, I'm sorry, I'm not aware. I'm sorry, I'm not aware. Okay? So these are the dialogues which you have to practice at home. Next, today we are going to see conversation official. आज हम लोग का एक नया टॉपिक है, that's what conversation official. Okay? Now what do you mean by conversation official? अभी कौन सा conversation है? ऑफिस का conversation है. Now this conversation is between the clerk and the student. अब यहाँ पे जो conversation है ये clerk और student के बीच में है. ओके हम लोग का ये फर्स्ट वीक है, स्टार्ट का किक स्टार्ट वीक है. इसके लिए हम लोग सिर्फ कॉन्वर्सेशन एंड नॉर्मल डायलॉग्स वगैरह कर रहे हैं. फ्रॉम मंडे आई विल बी टीचिंग यू बेसिक ग्रामर. तो एब्सेंट मत रहना एक भी दिन के लिए, वरना आप लोग लटक जाएंगे. ओके और आज मैं आप लोगों को बैच के ग्रुप में डालूंगा. आपके एप्लीकेशन में तो आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को डायरेक्टली जो वीडियोज है अपने लेक्चर के जो डेली वीडियोस है वो आपको वहां पर दिखेंगे. ठीक है? Yes. यस. कॉन्वर्सेशन ऑफिशियल. अभी ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन मींस व्हाट? दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन द क्लर्क एंड द स्टूडेंट. क्लर्क और स्टूडेंट के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है यहाँ पर ही. ओके दिस इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द क्लर्क एंड द स्टूडेंट. क्लर्क और स्टूडेंट के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है यहाँ पर. तो अभी आप लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे कैसा? Now, this conversation contains, like for example, if you are going to the office, अब वो क्लर्क के पास आप जो जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कैसे करेगा और आपको उसको आंसर कैसे देना है. सेम केस यू कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन एट द एयरपोर्ट. आप एयरपोर्ट वगैरह पे भी ये कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस, बैंक, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, वहाँ पे आपको ऐसा कॉन्वर्सेशन करने के लिए मिलेगा. तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है, आंसर कैसे देना है, वो आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा. सो कॉन्वर्सेशन ऑफिशियल. पॉइंट नंबर वन इज व्हाट? ग्रीटिंग. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम. आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? विश करेंगे सामने वाले को. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम. अभी आप लोग जब कहीं भी जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप लोग समझो आप लोग स्टूडेंट है, यू आर स्टूडेंट एंड यू आर एंटरिंग इनटू द ऑफिस ऑफ द क्लर्क और यू आर एंटरिंग इनटू द पासपोर्ट ऑफिस and you are going and you're saying sir, good morning sir. So the person will reply good morning. Then the person will ask you, the clerk will ask you some questions. For example, what's your name? आपका नाम क्या है? Here the clerk will ask questions and the student will answer it. The clerk will ask questions, the candidate will answer it. Okay? What's your name? आपका name क्या है? So we are going to reply with our name. I'm Wajid Qureshi.
I'm Umair Rashidi, etc. Okay. Next one is what? What's your birth dates? आपकी birth date क्या है? उसको birth date नहीं बोलना, क्या बोलना है उसको? What's your birth date? Birth date. Birth date. What's your birth date? Okay. What's your birth Or date? they- Birth date. Birth date. So what's your birth date? आपकी birth date क्या है? So you are going to tell your birth dates. Now I have one more question to you. अभी आप लोग दिन अभी आज फॉर एग्जाम्पल आज क्या डेट है? 04 मंथ समझो, मंथ है ओके समझो भी मुझे कुछ नहीं, 11th मंथ है ना, नवंबर 2020. अपन ऐसा लिखते हैं बराबर, अपन ऐसे डेट लिखते राइट. Yes, sir. यस सर. This format is actually wrong. Why? Some people they write like this. This is also wrong. Some people they say they write like this. This is also sometimes wrong. Now the problem is what? Point number one, we are not going to use their hyphen. Hyphen use नहीं करना है. क्यों? क्योंकि hyphen कहाँ पे use होता है? Words के बीच में. For example, mother in law. Mother in law. आपको दिख रहा है यहाँ पर दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हाइफन लगाया है. तो हाइफन डेट्स के अंदर लगता नहीं. पॉइंट नंबर वन, डेट्स में हाइफन लगता नहीं है. नेक्स्ट, कोलन कहाँ पे लगता है? वी आर यूजिंग कोलन फॉर टाइम. some Time. points. करेक्ट. आई यू सीइंग दैट कोलन इन टाइम और इन सबटाइटल्स? करेक्ट. सबटाइटल्स में भी कोलन लगता है और टाइम के लिए भी कोलन लगता है. तो कोलन टाइम के लिए लगता है, डेट के लिए नहीं लगता है. सेम केस when you are talking about the choices or options, at the time you put there the forward slash. Yes or no? Yes. आप लोग जब चॉइस देते हैं या फिर ऑप्शन देते हैं तो वहां पे आप लोग फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे. तो ये फॉर्मेट डेट लिखने का गलत है. आज तक क्या आपको किसी ने बताया था? नहीं बताया. दूसरी बात, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने उसका आंसर लेकर आए. व्हाई ओके डू वी राइट ओके कैपिटल ऑलवेज? No, sir. भाई आप लोग आंसर लाते नहीं, कुछ नहीं, कैसे चलेगा? रोहित, वाजिद भाई, यस. व्हाई ओके आर कैपिटल? ओके कैपिटल क्यों लिखते हैं? आपको पता है, इफ यू आर राइटिंग ओके लाइक दिस, रॉन्ग. इफ यू आर राइटिंग ओके लाइक दिस, इट इज रॉन्ग. यू हैव टू राइट ओके कैपिटल. आपको कैपिटल में लिखना है हमेशा ओके, भूलना नहीं. यू हैव टू राइट ओके ऑलवेज इन कैपिटल. आपको कैपिटल में ही लिखना है हमेशा. व्हाई? बिकॉज ओके इज अ शॉर्ट फॉर्म and the full form of OK is oral correct. पुराने जमाने में Correct start from C ना. हाँ, बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए. इन वेरी एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने के अंदर, शेक्सपियर के जमाने के अंदर, वहां पर ओरल ऐसा लिखते थे, ORL, ORRECT. आज के जमाने के अंदर ओरल का स्पेलिंग भी चेंज हो गया है और करेक्ट का स्पेलिंग भी चेंज हो गया है. अल्टीमेटली इंग्लिश चेंज हो गया है. इंग्लिश विल चेंज बाय द टाइम. टाइम के साथ में इंग्लिश चेंज होते रहेगा, याद रखना है. आज जो इंग्लिश है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है आगे से 25-30 साल के बाद में, हो सकता है, गारंटी. कलर का भी चेंज हुआ ना सर? करेक्ट. अभी स्पेलिंग कलर का चेंज नहीं हुआ है. अभी कलर का दो स्पेलिंग है, COLOR, अमेरिकन स्पेलिंग है, ये अमेरिकन स्पेलिंग है. एंड नेक्स्ट COLOUR, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है. तो both are correct. बोथ आर करेक्ट. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा फर्क है. आप दोनों भी यूज कर सकते हैं और मैं आपको दोनों इंग्लिश सिखाने वाला हूँ मेरे क्लास के अंदर, अमेरिकन भी और ब्रिटिश भी. तो अगर आप लोग फ्यूचर में अगर कोई अमेरिकन कंपनी में जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ब्रिटिश कंपनी में जा रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो ओके का फुल फॉर्म है ओरल करेक्ट. अब आप लोग बोलेंगे क्या कुछ भी फेंक रहा है, कहाँ से भी लेके आ रहा है, मैंने तो कभी आज तक कभी सुना भी नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया. यस, मैं आप लोग को डायरेक्टली दिखा रहा हूँ प्रूफ फ्रॉम गूगल बाबा. सो गूगल से मैं आपको डायरेक्टली प्रूफ दिखा रहा हूँ. दिख रहा है आपको ओरल करेक्ट? ये मैंने टाइप किया गूगल पर और आपके सामने आ गया एग्जाम्पल. ओके स्टैंड्स फॉर
all correct, or the illiterate phrase is what? Oral correct. बहुत पुराने जमाने में, ये देखो यहाँ पे लिखा है ओके ओरल करेक्ट, समझा? बहुत पुराने जमाने के अंदर जब शेक्सपियर वगैरह जिंदा थे वो टाइम पे ओके जो था उसका फुल फॉर्म था ओरल करेक्ट। इसके लिए ओके को कैपिटल लिखते हैं। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ फुल फॉर्म you have to capital all the letters. Yes or no? Yes. MBA, BBA, ATM, BC, BBC, etc. So whenever you are writing any full form, you have to capitalize all the letters. ये हमारा formula है। Formula मतलब written English में है। So this is for okay, हमेशा capitalize that। अगर आप लोग ऐसा लिख रहे हैं, अगर ये बंद कर दीजिए। अगर आप लोग ओके अगर ऐसा लिख रहे हैं, it will be absolutely wrong। अगर आप लोग ओके अगर ऐसा लिख रहे हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। यू हैव टू राइट ओके ऑलवेज कैपिटल, समझा? इसके लिए वहां पर ओके कैपिटल था, मैंने आपको यही पूछा था। सो बाय द वे डेट पर चलते हैं हमारी। तो इफ यू आर राइटिंग डेट्स इन सच फॉर्मेट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप लोग डेट अगर ऐसे भी अगर लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो डेट लिखना तो लिखना कैसे, कैसे लिखेंगे डेट? अगर आप लोग अगर ऐसा भी अगर लिखते हैं तो अगर समझो अगर आपने ऐसा भी अगर लिखा तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं डेट, प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं लिखना है। व्हाई? बिकॉज अमेरिकन पीपल दे राइट फर्स्ट मंथ, देन दे राइट डे, then they write year. British people they write day, month and year. अब प्रॉब्लम ये है अगर आप लोगों ने अगर ऐसा लिखा दैट मंथ पहले लिखा आप लोगों ने 11/04/2020 और अगर आप लोगों ने ब्रिटिश फॉर्मेट में लिखा 04/11/2020 तो अगर अमेरिकन आएगा तो वो क्या समझेगा चौथा महीना है 11 तारीख है। ब्रिटिश अगर आएगा तो क्या समझेगा 11वां महीना है 4 तारीख, सॉरी 11 तारीख है और चौथा महीना है। कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पर। सो डू नॉट राइट इन सच फॉर्मेट। अमेरिकन फॉर्मेट में भी नहीं लिखना है, ब्रिटिश फॉर्मेट में भी नहीं लिखना है। आपको लिखना है अपना न्यू फॉर्मेट के अंदर, जो कि अगर अमेरिकन आने दो, ब्रिटिश आने दो, जर्मन आने दो, चाइनीज आने दो, अर्जेंटीनियन आने दो, ब्राजीलियन आने दो, इंडियन आने दो, सबको समझ में आएगा। यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस 4 November 2020 और November 4 2020 दोनों भी चलता है। अभी कहाँ से भी आने दो आदमी, बालाजी नगर से आने दो, उर्ली कंचन से आने दो, स्वारगेट से आने दो, अर्जेंटीना से आने दो, कनाडा से आने दो, ब्राजील से आने दो, सबको समझ में आएगा ये। Why? Because 2020 is what year, November is what month, तो 4 क्या रहेगा? Should be come between November to 2020, right? हाँ, अब यहाँ पर जो है 4 के बाद में कॉमा आएगा। क्यों आएगा 4 के बाद में कॉमा? बिकॉज ये दोनों डेट्स और ये नंबर्स ये दोनों चेंज साथ में मिक्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन कॉमा लगाएंगे। देयर शुड बी अ कॉमा आफ्टर दिस। ओके, तो यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस। अभी किसको भी आने दो, सबको समझ में आएगा, बट डोंट दोनों राइट डेट लाइक दिस। ओके, दोनों भी चलेगा ना सर? दोनों भी चलेगा, बोथ आर करेक्ट। हाँ, यू कैन राइट आइदर लाइक दिस और यू कैन राइट आइदर लाइक दिस, और you can write like this as well 4th November 2020 or November 4th 2020 ऐसा भी चलता है। सो चारों भी चलेगा, आप कैसा भी लिखो, बट डोंट राइट डेट्स लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर आप लोग डेट लिखेंगे सामने वालों को कंफ्यूजन में आएगा कि कौन सा डेट है कौन सा मंथ है, अक्सर होता है ऐसा। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ what's your birth date? So you're going to tell your birth dates over there. For example, August 28, 1994, and see after 28 there is a comma. दिख रहा है? So Yes. what's your birth date? What's your birth date? Birth date August 28, 1994. Next one. How much do you weigh? What do you mean by this? How much do you weigh? मतलब यानी आपका वजन कितना है? How much do you weigh? और अपन बोल सकते हैं वहां पर what's your weight? आपका वेट कितना है? How much do you weigh or what's your weight? आपका वेट कितना है? How much do you weigh or what's your weight? Okay, that's what 50 kilos, 60 kilos, 80 kilos, 90 kilos, 95 kilos. So how much do you weigh? 50 kilos. Next one. Where were you born? आप पैदा कहाँ हुए थे? Where
were you born? Where were you born? आप पैदा कहाँ हुए थे? So that's what I was born in Pune. I was born in Pune. Okay. So where were you born? I was born in Pune. I was born in Bangalore. I was born in Mumbai. Next. How tall are you? What do you mean by this? How tall are you? मतलब यानी आपकी Height. height कितनी है? How tall are you? Or you can say there, what's your height? How tall are you? Or what's your height? How tall are you? Or what's your height? So we can say I'm 5 feet 6. I'm 5 feet 8. I'm 5 feet 10. I'm 1 meter 70 tall. ये अमेरिकन लोग ऐसा बोलते हैं. I'm 1 meter 75 tall. I'm 1 meter 80 tall. ओके और ब्रिटिश लोग बोलेंगे I'm 5 feet 6. इंच बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली 5 feet 6 क्या है, इंच ही है, किलोमीटर नहीं है क्या नहीं? तो इंच बोलने का जरूरत नहीं है. So I'm 5 feet 6. I'm 5 feet 8, etc. Next one, where do you live? अभी अपन क्या बोलते हैं, where do you live? अब अपने इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप लोगों ने सुना रहेगा people say where do you stay? Yes or no? Yes. आप लोग Yes, sir. अक्सर ऐसे पूछते हैं क्या नहीं? Yes. Yes. Now please remember, if you are in my class means you are going to learn international English from UK and USA. We are not going to follow any sort of local English rules. Locally लोग कुछ भी फेंकते हैं. अभी आप लोगों ने ऐसे भी सुना रहेगा वर्ड, ऐसा सेंटेंस भी सुना रहेगा, he rides fastly. सुना है आप लोगों ने ये? यस सर कितने लोगों ने सुना है? प्लीज टेल मी. Yes sir, सुना है. सर सुना मैंने है ना? सुना सुना है. मिस्टर जुबैर आपने सुना है? वाजिद भाई आपने नहीं. सुना है? Nine. I am riding very fastly. The fan is going very slowly. Fastly. Yes. Yes. सुना है? ओके. He riding अब मैं fast. आपके सामने डिक्शनरी ओपन कर रहा हूँ. ये जो फास्टली वर्ड है ये अपने घर में बनाया हुआ है लोगों ने. लोगों को पता नहीं, अपने दिल से कुछ भी ठोक देते हैं लोग. एक्चुअली फास्टली नाम का कोई वर्ड इंग्लिश के डिक्शनरी में है ही नहीं. अब मैं इधर टाइप कर रहा हूँ फास्टली. फास्टली नहीं, डायरेक्ट लास्टली दिखा रहा हूँ. ऐसे कोई वर्ड है ही नहीं. अपने दिल से अपन कुछ भी फेंकते. अरे काय राव सकाळी माझा अलार्मच नाही वाजला. अरे अलार्म नहीं है वो, अलार्म है, अलार्म. अलार्म नहीं है. फास्टली नाम का कोई वर्ड है ही नहीं. फास्टली जब मैं डाल रहा हूँ तो उधर आ ही नहीं रहा है फास्टली. फास्ट आ रहा है खाली. फास्टली नाम का वर्ड नहीं है, अपने घर पे बनाया लोगों ने, तो लोग कुछ भी ठोकते हैं. सेम केस, वेयर डू यू स्टे. अगर ये स्टे का मतलब क्या होता है? नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टे एंड लिव? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टे एंड लिव? वाजिद भाई, स्टे एंड लिव. Yes, what's the difference between stay and live? Yes, Zubair bhai, stay and live. No. Yes, Rohit bhai, stay and live. Stay we use for temporary. Yes or no? I'm staying at a hotel. I'm staying at my friend's place. I'm staying at my brother's house. Stay for Yes. temporary use करते हैं. And live we are using for permanent. Live we are using for permanent. समझा? और अपने यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? Where do you stay? Where do you stay? Wrong. Stay नहीं, उन लोग को बोलना चाहिए था where do you live? आप रहते कहाँ हैं? Where do तो you- stay नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पे बोलना चाहिए उन लोगों को live. Where do you live? Live. समझ में आ रहा है? Now, so next question is there, where do you live? So I live in Pune. तो आपके जो होम टाउन रहेगा वो जगह का नाम आएगा, होम टाउन का नाम आएगा वहाँ पर. Where do you live? I live in Pune. Where do you live? I live in Pune. I live in Bangalore. I live in Mumbai. Next one. What's your qualification? Qualification नहीं बोलना उसको, क्या बोलेंगे? Qualification. What's your qualification? What's your Qualification. qualification? What's your So I'm qualification? pursuing graduation in arts. I have done masters in arts. I have done bachelors in commerce. I have done masters in computer applications. I have done PhD in English. I have done masters in business administration. So what's your qualification? And the second last question is, where is your residence? What do you mean by residence? Residence? Yes, घर. residence.
घर, करेक्ट. आपका घर कहाँ है? आपके घर का लोकेलिटी कहाँ है? So there is a huge difference between where do you live and where is your residence. Where do you live मतलब यानी आपका होम टाउन कौन सा है, आप कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह से हैं आप. And where is your residence means what? आपका घर कहाँ पर है, आपका घर कहाँ है. So I reside in Brighton Road, Swargate, बालाजी नगर, कोंडवा, ये सब क्या है? रेसिडेंस है आप लोगों का. Getting it? So where is your residence? Brighton Road, कोंडवा, उर्ली कंचन, वो जगह का नाम आएगा आपके. MG Road. Next one, what's your designation? Last question is what? What's your designation? आपका designation क्या है? What do you mean by designation? प्रोफेशनल. Correct. Actually, your status, your post. आपकी post क्या है? What's your designation? I'm a doctor. I'm a teacher. I'm a lawyer. I'm an HR manager. I'm a senior executive officer. Getting it? I'm an MD. I'm a CEO of the company. Okay. So what's your designation? So आप लोग को आपका डेजिग्नेशन बताना है. एंड एट द एंड द क्लर्क विल से थैंक यू, और वो कैंडिडेट क्या बोलेगा? माई ड्यूटी माई प्लेजर. ये तो मेरा फर्ज था और इसी में मेरी खुशी है. हाँ हाँ, तो पासपोर्ट जल्दी मिलेगा. और कभी अगर क्लर्क को अगर नाराज किया तो वो पासपोर्ट लटका डालेगा आपका. ओके, सो माई ड्यूटी माई प्लेजर. दिस इज व्हाट सिंपल कॉन्वर्सेशन इज देयर फॉर इन्फो कॉन्वर्सेशन ऑफिशियल. ऑलराइट, यहाँ पर क्लर्क क्वेश्चन करेगा और स्टूडेंट विश करेगा पहला. So for example, good morning, sir. Good morning. Good evening, sir. Good evening. What's your name? I'm Rohit Kunchit. What's your birth date? August 20th, 1994. How much do you weigh? 80 kilos. Where were you born? I was born in Pune. How tall are you? I'm 5 feet 8. Where do you live? I live in Pune. What's your qualification? I've done masters in arts. Where is your residence? Urli Kanchan. What's your designation? I'm an engineer. Thank you. My duty, my pleasure. Simple conversation है. Okay. Now यहाँ पर थोड़ा उल्टा है. यहाँ पे पहले विश कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा. और क्वेश्चन कौन करेगा? क्लर्क. Now Mr. Umair is the student and I am the clerk. Okay. Yes, Mr. Umair, can you please wish me? Good evening, sir. Good evening. What's your name? I'm Umair Rashidi. What's your birth date? 1st of January 2022. 2002. Okay, 2022. 2002. Next. How much do you weigh? I'm 51 kilos. Where were you born? I was born in Pune. How tall are you? I'm 5 feet 9. Where do you live? I live in Pune. What's your qualification? I have done first year of BCom. Where's your residence? An IBM Road. What's your designation? I want to become a entrepreneur. आपको डायरेक्टली आपका डेजिग्नेशन बोलना है. I'm an entrepreneur. I'm an entrepreneur. Thank you. Goodbye. My duty, my pleasure. Okay. आप लोग इसके अंदर और भी क्वेश्चन ऐड कर. फॉर एग्जांपल, व्हाट्स योर आधार कार्ड नंबर? व्हाट्स योर पैन कार्ड नंबर? व्हाट्स योर मेल एड्रेस? व्हाट्स योर एड्रेस? आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं. व्हाट्स योर आइडेंटिटी कार्ड नंबर? व्हाट्स योर रजिस्ट्रेशन नंबर? आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं. व्हाट्स योर फोन नंबर? आप लोग ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन में. ओके, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं. यस, नाउ मिस्टर जुबैर विल विश मिस्टर उमैर. Good evening, sir. Good evening. What's your name? I am Zubair Sheikh. What's your birthday? June 25, 1987. वेट, हाँ. प्लीज पे अटेंशन. अभी अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम है किसके अंदर? आप लोगों के प्रोनाउंसिएशन में. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. अब आप लोगों को आपका साउंड निकालना कैसे है? आपको आपका साउंड निकालना कैसे है? Getting it? Yes. अब वो आपको आना चाहिए कि आपको आपका साउंड कैसे निकालना है. दिन का साउंड, दिन का नाम, आपके प्लेस का नाम,
मंथ्स का नाम, ये आपको आना बहुत जरूरी है. अगर आपको नहीं आता है, देन मे गॉड हेल्प यू. अगर आपको ये नहीं आता है तो आप लोग लेटर डायरेक्टली. मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें डाला हूँ, तो आप लोग यहाँ से भी जाकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं. I'm just playing the video. Getting insulted in public. इंग्लिश बहुत सारे लोगों का सेम इशू है कि हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं पब्लिक प्लेसेस. फॉर एग्जांपल, अब जब हम लोग कभी अपना बर्थडे क्या हो गया, हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बैड निकलता है. फॉर एग्जांपल, मंथ्स ऑफ द ईयर्स. नाउ अब हमारे पास इसका प्रोनाउंसिएशन है. फॉर एग्जांपल, जनवरी, वी डोंट से जनवरी. दैट्स व्हाट जनवरी. February, not February. March, April, not April. May, June, July, August. That's not August. September, it's not September. October, that's not October. November and December. Please keep on following me for more advanced English and good pronunciation. Getting it? Name of the days. Pronunciation. आप लोग यहाँ पर मुझे वेडनेसडे को कंपनी जाना है. इंसल्ट है. सेम प्रॉब्लम. हमारे यहाँ पर हम लोगों को डेज के नाम बोलने का तरीका नहीं पता है. मीन्स द एक्सेंट. नाउ हम जैसे बोलते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. नो, रॉन्ग. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वन, वी कैन से इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट. फॉर एग्जांपल, मंडे, ट्यूसडे, वो ट्यूसडे नहीं है, ट्यूसडे. Wednesday, it's not Wednesday. That's Wednesday. Thursday, it's not Thursday. Friday, Saturday, it's not Saturday. And Sunday. That's what the flow of the sound. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, Saturday, day. Getting it? So this is what exactly the sound. That's January. आप कहीं और बात कर रहे हैं शायद. Pay attention. So that's what January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay? Yes, let's continue. Yes, Umair, can you please ask once again to Mr. Zubair, what's your birth date? What's your birth date? June 25, 1987. How much do you weigh? 68 kilos. Where were you born? I was born in Mumbai. How tall are you? I am 5 feet 7 inch. Where do you live? I live in Pune. What's your qualification? I am in master in software. Where is your residence? Kondua. Where is your destination? What's your destination? Nation. I am a software Destination. engineer. Thank you. My duty, my pleasure. Very good. Next, now Mr. Rohit, can you please wish Mr. Zubair? Good morning. Evening. Good evening. Sorry. Good evening. Good evening. What's your name? Oh, No, I am asking. Okay. What's your name? I'm Rohit Kunjir. What's your birth date? October 11th, 2000. How much do you weigh? 60 kg. 80 kg. Okay. Can you- BG, नहीं, direct kilos, 80 kilos. 80 Okay. kg. Sorry. Short form नहीं use करना है, okay? Okay. Good. What's your birth date? October 11th, 2000. Where you were born? I was born in Thane. How tall are you?
I'm 6 feet. Where do you live? I'm living in Uruli Kanchal. I live in Urdu Kanchan. What's your qualification? I'm bachelor in architecture. I've done bachelor's in architecture. Can you scroll up? Pardon? Very What's your residence? Railway station. Where is your residence? Near railway station. What's your designation? I'm third architecture. I'm third year in architecture. I'm an Thank you. architect. I'm an- Thank you. Thank you. My My- pleasure. My pleasure. Good. Now you wish Mr. Abdul Wajid. Okay. Rohit, wish him. Yes. Good evening, sir. Hello. Mr. Wajid. Wajid bhai. Hello. 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 Wajid bhai, where are you? You're not audible. Okay. You wish Umair, please. आ रहा है आवाज हाँ अभी आ रहा है. Correct. Wish him. Good evening, sir. गुड इवनिंग Rohit, What's please your- ask him. Okay, What's your name? I'm Wajid Qureshi. What's your birthday? Birthday. December 29, 1992, How much do you weigh? 80 kilos Where you were? in Born. Nanded. How tall are you? Where you? I am 6 feet. Where do you live? I live in Nanded. What's your qualification? I have done MCA, Master of Computer Application. Where is your residence? Short form नहीं use करना है. Computer applications. Yes, sir. Yes. Where is your residence? Where is your Chaitanya Nagar. residence? Chaitanya Nagar. What's your desi- de- I'm a software engineer. Thank you. Thank you. Okay. My duty, my pleasure. Very good. Umair, please wish Mr. Abdul Wajid. Good evening, sir. Good evening. What's your name? I'm Umair Rashidi. What's your birth date? 1st of January 2002. How much do you weigh? 51 kilos. Where were you born? I was born in Pune. Where do you live? I live in Pune. What's your qualification? I have done my first year of BCom Where is your residence? and IBM Road. What's your designation? Entrepreneur. I'm an entrepreneur. Thank you. My duty, my pleasure. Getting it? It is really a very easy conversation. Hello. Yes. Hi. Good morning, sir. Good morning. What's your name? What's your birth date? How much do you weigh? Where were you born? How tall are you? Where do you live? What's your qualification? Where is your residence? What's your designation? What's your mail address? What's your address? What's your mail ID? What's your phone number? You can ask any question. So this conversation is between the clerk and the student, and this conversation you can have in offices especially. So you have to practice this at home as well. Now, tomorrow we are going to have another topic which is really amazing. That's what saying thank you in English. How to say thank you in English, and really very good to know that one, that we are already ahead of one day. Apna batch already आगे चल रहा है. So one day. So this is what exactly, if you have any other friends who want to join classes, so they can join classes with you as well. So it will be quite helpful for them to grab the opportunity on time. All right. So if you have any other friends, you can ask them and you can just make them to join.
And if you have any questions, you can ask me directly. And today I'll be sending you the link on your text message. Okay, so just go through that and download the app. You'll directly jump into the batch and you'll find there all the videos. Okay, So Okay. on the Google, where exactly I want to go for search the document? documents Because you have. yeah, because actually I went there, but I did not find that option. Okay, see, just do one thing. In your mobile, download an application that's Google Classroom. Okay, download Okay, the app Google Classroom and insert the mail which you have given me. Just insert that mail there in the Google Classroom. You will directly see there the classroom. You will directly enter so into the class. so And in the all, Google Mail, in the Google Mail. not in Google Meet, sir. It is an application in Play Store. Okay, just Google Classroom. Google Classroom. Okay, Yeah, Google Classroom Play Store application is there, so you can go and you can download that application, and you will just insert there your mail ID which you have given me. right. Okay, so you'll get all the data over there. See, Google Classroom like this. This is the symbol of the application. Just go and download this application from Google Play Store, and you'll get each and everything there. And if you will face again problem, then I'll send you the video. Okay, Yes, yes. sure, no problem at all. So please go and download the application or the documents from there. And if you have any questions, you can ask me directly. And if you have any other friends who want to join, so you can just make them to join with you. All right, see you. Yeah, Cheerio. cheery. Moving on. Oh my gosh. Launch.